हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमें एक हफ्ते के अंदर ये बुक ख़त्म करनी है, तो छुट्टी लेके तो नहीं होगा। जैसे कि मैंने आज आपको बता दिया था कि आज कोई लाइव स्ट्रीम नहीं होगी, बट हम लोग रिकॉर्ड तो करेंगे, पढ़नी तो है बुक। चलो, पेज नंबर 32, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इम्प्रेस्ड इन द सबकॉन्शियस is expressed. William James, the father of American psychology, said that the power to move the world is in your subconscious mind. Your subconscious mind is one of infinite intelligence and boundless wisdom. It is fed by hidden springs and is called law of life. ठीक है, इसके पास बहुत ज़्यादा पावर है। सबकॉन्शियस माइंड के पास हमारे जो है इन्फिनाइट पावर है, बहुत ज़्यादा तेज़ है, और इसी को कहते हैं लॉ ऑफ लाइफ। Whatever you impress upon your subconscious mind, the latter will move heaven and earth to bring it to pass. ठीक है, आप अपने दिमाग से धरती में स्वर्ग ला सकते हो, ऐसा लिख रहा है। You must therefore impress it with right ideas and constructive thought. आप इसका यूज़ करके एक कंस्ट्रक्टिव आइडिया बना सकते हो और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। The reason there is so much chaos and misery in the world is because people do not understand the interaction of their conscious and subconscious mind. इस दुनिया में इतना chaos क्यों है, क्यों इतनी भगदड़ और चिल्लाना विल्लाना क्यों चल रहा है? क्योंकि लोगों को अपने साइकोलॉजी कह रहा हूँ, कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड को मतलब मिलाना नहीं आता। अगर हम लोग इस दिमाग की पावर को मिला दे, दोनों कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं, ऐसा हमारा ऑथर कह रहा है। देखते हैं, इतना ज़्यादा ज़ोर सबकॉन्शियस माइंड पे पूरी किताब लिख दी, कुछ ना कुछ तो बात होगी। आगे बढ़ते हैं। When these two principles work in accord, in concord, in peace and synchronously together, you will have health, happiness, peace, and joy. There is no sickness or discord. When the conscious and subconscious work together harmoniously and peacefully, the tomb of Hermes was opened with great expectancy and a sense of wonder because people believed that the greatest secret of ages was contained therein. अब क्या हुआ, एक टूम ऑफ हर्मीज की कब्र को जब खोदा गया तो उसमें पता चला कि मतलब इस वजह से खोल रहे थे कि कुछ ना कुछ तो जानकारी मिलेगी। द सीक्रेट वॉज एज विद इन सो विदाउट, एज अबव सो बिलो. In other words, whatever is impressed high your subconscious mind is expressed on the screen of space. This same truth was proclaimed by Moses, Isaiah, Jesus, Buddha, Zoroaster, Lothaise, and all the illuminate seeds of the ages. Whatever you feel as true subjective is expressed as conditioned experiences and events. मोशन एंड इमोशन मस्ट बैलेंस. हमारा जो मोशन है और इमोशन है वो बैलेंस होना चाहिए. एज इन हेवन योर माइंड, योर ओन माइंड, सो ऑन अर्थ इन योर बॉडी एंड एनवायरमेंट. दिस इज द ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ. मतलब एज इन हेवन योर ओन माइंड, सो ऑन अर्थ इन योर बॉडी एंड एनवायरमेंट. दिस इज द ग्रेट लॉ ऑफ लाइफ. You will find throughout all nature the law of action and reaction, of rest and motion. सबको पता है रेस्ट और मोशन का क्या होता है, ठीक है. अगर मैं आपको धक्का दूंगा तो आप भी कुछ फोर्स मुझ पे डालोगे. अगर मैं दीवार को पुश करूँ तो दीवार भी एक फोर्स मुझ पे लगा रही है ना. These two must balance. और जब ये बैलेंस हो जाएंगी, इनको बैलेंस करना पड़ता है. Then there will be a harmony and equilibrium. तभी जाके हारमनी और इक्विलिब्रियम स्टेट आती है, होता है ना. यू आर हेयर टू लेट द लाइफ प्रिंसिपल फ्लो थ्रू यू रिदमिकली एंड हारमोनियसली. आप इस दुनिया में क्यों आए हो? क्योंकि आपसे जो ये सारी चीज़ें जा रही हैं वो एक सिस्टमेटिक वे से जाना चाहिए. अगर आप गिटार बजाओ बिना रिदम के तो सब बेकार है ना, मज़ा नहीं आता. बट उसी को हम अच्छे से गिटार को बजाएं तो लोगों को सुनने में मज़ा आता है. और ये कब होता है? जब हमारा दिमाग और हाथ एक साथ चलते हैं, एक बीट पे चलते हैं. एंड द आउटगो मस्ट बी इक्वल. द इम्प्रेशन एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल. ऑल योर फ्रस्ट्रेशन इज ड्यू टू अनफुलफिल्ड डिज़ायर. हमारी जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्यों होती है? क्योंकि जो हमें चाहिए वो मिलता नहीं है.
इसीलिए हम लोग परेशान रहते हैं। यहाँ पे आता है सबकॉन्शियस माइंड। वो कहता है, मतलब बोला गया है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड को बोलो कि आप कर सकते हो कर सकते हो कर सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करेगा और वो मदद करेगा आपको सब कुछ दिलाने में। पेज नंबर 33। इफ़ यू थिंक नेगेटिवली, डिस्ट्रक्टिवली एंड विशियसली, these thoughts generate destructive emotions which must be expressed and find an outlet. These emotions, being of a negative nature, are frequently expressed as ulcers, heart trouble, tensions, and anxieties. समझे? जितने भी नेगेटिव थॉट, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स और ये विशियसली थॉट्स आते हैं आपको, ये सब आपके डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की वजह से आते हैं। अगर किसी ने आपको बुरा बोल दिया, आपने उससे सच मान लिया, वैसा ही हो जाएगा। एक कहानी सुनाई थी, किसी ने बोला कि आपकी एक हफ्ते के अंदर डेथ हो जाएगी, उसने मान लिया, उसने विल बना के सब रेडी कर ली और एक हफ्ते बाद मर भी गया। वो प्रेडिक्शन की वजह से नहीं मरा, उसने ये मान लिया कि वो मरेगा, इसलिए वो मर गया। आगे बढ़ते हैं। What is your idea of feeling about yourself now? Every part of your being expresses that idea. Your vitality, body, financial status, friends, social status represent a perfect reflection of the idea you have of yourself. This is the real meaning of what impressed in your subconscious mind and which is expressed in all the phases of your life. We injure ourselves by negative ideas, which we entertain. How often you wounded yourself by getting angry, fearful, jealous, and vengeful. These are the poisons that enter your subconscious mind. जलन, fearfulness, एंग्रीनेस, वेंजफुलनेस, ये सब चीज़ें एक पॉइजन की तरह आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में एंटर होती है। यू वर नॉट बॉर्न विद दीज नेगेटिव एटीट्यूड्स। आप इसके साथ पैदा नहीं हुए हो। जेलेसी के साथ कोई पैदा नहीं होता। फीड योर सबकॉन्शियस माइंड लाइफ गिविंग थॉट्स। अपने सबकॉन्शियस माइंड को लाइफ गिविंग थॉट्स दीजिए एंड यू विल वाइप आउट ऑल द नेगेटिव पैटर्न्स लॉस्ट देयर इन। एज यू कंटिन्यू टू डू दिस, all the past will be wiped out and remembered no more. The subconscious heals a malignancy. The subconscious mind heals a malignancy of the skin. अब कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने मेलिग्नेंसी को ठीक कर दिया, जो कि स्किन डिजीज है एक तरह से। देखते हैं आगे। A personal healing will ever be most convincing evidence of healing power of subconscious mind. Over 40 years ago, I resolved a malignancy of the skin through prayer. Medical therapy had failed to check the growth and it was getting progressively worse. मतलब दिन प्रतिदिन वो बीमारी बढ़ती चली गई और ख़राब होती गई और मेडिकल थेरेपी ने हाथ खड़े कर लिए थे। A clergyman with a deep psychological knowledge explained to me the inner meaning of 139th plasm wherein it says, in the book all my members were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. He explained that the term book meant my subconscious mind. उस बुक का मतलब है आपका दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड, which fashioned and molded all my organs from an invisible cell. He also pointed out that inasmuch as subconscious mind made my body, it could also recreate it and heal it according to the perfect pattern within it. This clergyman showed me which, sorry, this clergyman showed me his watch and said, this had a maker, and watchmaker had to have the idea first in mind before the watch became an objective reality, and if the watch was out of order, the watchmaker could fix it. My friends reminded me that the subconscious intelligence which created my body was like a watchmaker, and it also knew exactly how to heal, restore, and direct all the vital functions and processes of my body, but that I had to give it the perfect idea of health. This would act as cause, and the effect would be a healing. I prayed in a very simple way as follows. My body and all its organs were created by infinite intelligence in my subconscious mind. It knows how to heal me. Its wisdom fashioned all my organs, tissues, muscles, and bones. This infinite healing presence within me is now transforming every atom of my being
making me whole and perfect now. I gave I give thanks for the healing I know in taking place now. Wonderful are works of creative intelligence within me. I prayed aloud for about 5 minutes, 2 or 3 times a day, repeating the above simple prayer. In about 3 months, my skin was whole and perfect. As you see, all I did was give life giving patterns of wholeness, beauty, and perfection to my subconscious mind, thereby obliterating, obliterating the negative images and patterns of thought lodged in my subconscious mind, which were the cause of my all trouble. मतलब मेरे ही दिमाग में कुछ ना खराब चलता रहा, उसकी वजह से मेरी लाइफ भी खराब होती गई. Nothing appears on your body except when the mental equivalent is first in your mind. And as you change your mind by drenching it with incessant affirmatives, incessant affirmatives, you change your body. This is the basis of all healing. Marvelous are their works, and that my soul knoweth right well. Plasm 139:14. सबकॉन्शियस माइंड. मतलब हम लोग अगर अपने मेंटल कैपेबिलिटीज़ को जो जागरूक कर लें और उसे समझ लें तो हम सेल्फ हीलिंग पे जा सकते हैं. वी कैन बिकम वोल्वरीन. देखा है ना वोल्वरीन. तो मतलब हम लोग सेल्फ हील कर सकते हैं. और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कुछ लोग ऐसी ऐसी बीमारियों से बच जाते हैं जिससे कोई नहीं बच पाता. दैट इज़ द पावर ऑफ विल. हाउ द सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ द बॉडी. कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है. लेट्स चेक इट आउट. While you are awake or sound asleep upon your bed, the ceaseless, tireless action of your subconscious mind controls all the vital functions of your body without the help of your conscious mind. अब देखो, जब आप सो जाते हो, जब आपको कोई टेंशन नहीं होती और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है. वो काम करता रहता है और बाकियों से भी काम करवाता रहता है. आपके जितने भी बॉडी के वाइटल फंक्शंस है, रात को जो 8-9 घंटे की आप नींद लेते हो, वो करता है. फॉर एग्जाम्पल, वाइल यू आर asleep, your heart continues to beat rhythmically, your lungs do not rest, and the process of inhalation and exhalation, whereby your blood absorbs fresh air, goes on the just same as when you are awake. Your subconscious control your digestive process and glandular secretions, as well as all the other mysterious operation of your body. The hair on your face continues to grow whether you are asleep or awake. आपके चेहरे के बाल, ये दाढ़ी, ये बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाएंगे, चाहे आप सो या जागो, है ना, कभी रुकते नहीं है ना. Scientists tell us that the skin secretes much more perspiration during sleep than during the waking hours. अब वो बोल रहा है, साइंटिस्ट ने ये चीज़ की है कि हमारे जो ये है ना स्किन, वो सिक्रीट करती है पर्सिपिरेशन ड्यूरिंग द स्लीप देन द ड्यूरिंग द वेकिंग आवर्स. मतलब हम जब जागे रहते हैं उससे ज़्यादा वो काम तब करती है जब हम सो रहे हो. योर आइज, ईयर्स एंड अदर सेंसेस आर एक्टिव ड्यूरिंग स्लीप. हमारी आँखें, कान, नाक सब एक्टिव रहता है जब हम सो रहे होते हैं. For instance, many of our great scientists have received answers of perplexing problem while they were asleep. They saw answers in a dream. कभी कभी देखना ऐसी चीज़ें होती है कि हम लोग आंसर्स देखने लग जाते हैं अपने ड्रीम में. होता है ना आप लोगों के साथ भी, मेरे साथ तो होता है. तो बहुत सारे लोगों को सपनों में भी आंसर आ गए हैं. तो वो सपना नहीं है, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पीछे पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, वो हमें सपने में जवाब आ जाता है. बिकॉज आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ द रिजल्ट और हैज़ द आंसर. तो बैठ के मेडिटेशन करके पूछो ज़रा उससे, वो जवाब देगा. दे सो द आंसर इन ड्रीम. Oftentimes, your conscious mind interferes with the normal rhythm of the heart, lungs, and functioning of the stomach and intestine by worry, anxiety, fear, depression. These patterns of thought interfere with the harmonious function of your subconscious mind. When mentally disturbed, the best procedure is to let go, relax, and still wheels of your thought process. अब क्या है, कभी भी आप थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो ना, तो उसको फील मत होने देना.
रिलैक्स करना, लेट गो कर देना, कोई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं. स्टिल द व्हील ऑफ योर थॉट प्रोसेस. स्पीक टू योर सबकॉन्शियस माइंड. अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करो, telling it out to take over in peace, harmony, and divine order. You will find that all function of your body will become normal again. और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बात करने लगोगे ना, उसे बोलोगे कि तू टेक ओवर कर ले, पीस, हार्मनी एंड डिवाइन कर, ऑर्डर में कर सारी चीज़ों को, तो ये सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. You will find that all the function of your body will become normal again. Be sure to speak your subconscious mind with authority and conviction. आपको अपने दिमाग से ऐसे बात करनी होगी जैसे कि आप उस पर थोड़ा काबू पा रहे हो, है ना. ऐसे नहीं कि बस भाई जी कर देना, ऐसे नहीं. थोड़ा अथॉरिटी दिखाओ, तुम्हारा ही दिमाग है. एंड इट विल परफॉर्म, इट विल कन्फर्म टू योर कमांड. योर सबकॉन्शियस सीक्स टू preserve your life and restore you to health at all cost. It causes you to love your children, which also illustrate an instinctive desire to preserve all life. Let us suppose you accidentally ate some bad food. Your subconscious mind would cause you to regurgitate, gurgitate, gurgitate, regurgitate. If you advent, it, sorry, wait a second, it advertently took some poison, your subconscious powers would proceed to neutralize it. जब हम गलती से कोई पॉइज़न खा लेते हैं तो हम, आपने देखा होगा कभी कभी हम नॉर्मल पानी पी लेते हैं, कहीं से भी पानी पी लेते हैं, हमें कुछ नहीं होता. बट कभी हम लोग ऐसा पानी पीते हैं और कोई बोलते भाई ये तो गंदा पानी था, फिर हम सोचते रहते हैं यार ये पानी पीने से ये हो जाएगा, ये पानी पीने से ये हो जाएगा, ओ माय गॉड ये, और वो चीज़ हो जाती है. और कभी कभी आप नाना नानी के घर से पानी पियो, वो नीचे बोरवेल से आ रहा होता है, वो उससे भी ख़तरनाक होता है जो हम दिल्ली में पानी पी रहे हैं. क्योंकि आजकल हर जगह ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो ही चुका है. कोई खेती कर रहा है तो फर्टिलाइज़र्स डाल रहा है, फर्टिलाइज़र्स ज़मीन में जाते हैं तो वो ज़मीन को प्रदूषित करते ही हैं. ठीक है. तो वैसे ही अगर कभी आपने गलत चीज़ खा ली तो आप छोड़ दो. ठीक है. ये मत सोचो कि आपने ये कर दिया वो कर दिया. कोई भी गलत चीज़ खा दी उसके बारे में सोचो मत. जो कुछ होगा नेक्स्ट डे दवाई खा लेना, बात ख़त्म, डॉक्टर के पास चले जाके, है ना. ज़्यादा नहीं सोचना कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, गूगल पे सर्च करने लग गए, कैंसर दिखा दिया. नहीं, ये सब चीज़ें नहीं. You completely entrusted yourself to its wonder working power. You would be entirely restored to health. How to get the subconscious to power work for you? कैसे आप अपने subconscious mind को अपने लिए काम करवा सकते हो, देखते हैं. The first thing to realize is that your subconscious mind is always working. It is active night and day. आपका जो दिमाग है, subconscious mind है, वो दिन रात जागता है. Whether you act upon it or not, subconscious is the builder of your body. Subconscious mind एक builder है आपकी body का. But you cannot consciously perceive or hear that inner silent process. आप कभी उस process को सुन नहीं सकते. दिल चल रहा है, लंग्स अपने काम कर रहे हैं, बाकी जो बॉडी पार्ट है वो भी अपने काम कर रहे हैं, पर आप इनको सुन नहीं सकते. अभी मत बोलना दिल को सुन सकते हैं, लबडब चल रहा है, नहीं. वैसे जो उसका प्रोसेस है, बाकी जो लिवर का प्रोसेस जो चल रहा है, स्टमक का जो प्रोसेस चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको इतना माइंड पूरे दुनिया में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा उसके बारे में, चलते रहता है पर वो प्रोसेस. योर बिजनेस इज़ विद योर कॉन्शियस माइंड एंड नॉट योर सबकॉन्शियस माइंड. आपका ज़्यादातर बिजनेस क्या है, कॉन्शियस माइंड पे ही है कि भाई हाँ चलो ये चीज़ है जो दिख रही है वही सच है, पर सबकॉन्शियस माइंड पे ध्यान देना होगा. जस्ट कीप योर कॉन्शियस माइंड बिजी विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द बेस्ट. अपने कॉन्शियस माइंड को बिजी रखो अच्छी चीज़ों में कि हाँ ये अच्छा ही होगा. नेगेटिव चीज़ों को आप इग्नोर करो. अब टाइम गया, आप बोलो यही होगा, जो चाहते हो वही होगा. एंड मेक श्योर द थॉट्स यू हैबिचुअली थिंक आर बेस्ड ऑन वट एवर थिंग्स आर लवली, ट्रस्ट, जस्ट एंड ऑफ गुड रिपोर्ट. और हमेशा याद रखना जब भी आप कोई चीज़ के बारे में कॉन्शियस माइंड को भी बोल रहे हो तो वो सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए. ठीक है. जिसमें प्यार का भाव हो, लव हो, ट्रू हो, जस्ट एंड गुड रिपोर्ट हो. नेगेटिव चीज़ों के बारे में नहीं डिस्कस करना है, ना ही आपको अपने दिमाग को बताना है. बिगिन नाउ टू टेक केयर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. Knowing is your heart and soul that your subconscious mind is always expressing, reproducing, and manifesting according to your habitual thinking. Remember, just as water takes the shape of pipe it flows through, the life principle and follows, and you flow through you according to the nature of your thoughts. Claim that the healing presence in your subconscious is flowing through you as harmony,
health, peace, joy, and abundance. Think of it as a living intelligence, a lovely campaign on the way, firmly believing it is continually following through, vivifying, inspiring and prospering you. It will found it will respond exactly this way. It is done unto you as you believe. Healing principle of the subconscious restores atrophied optic nerves. मतलब atrophied optic nerves को भी ठीक कर दिया आपके subconscious mind ने. देखते हैं कैसे. There is the well-known, duly authenticated case of Madame Bayer of France, recorded in the archives of the medical department of Lourdes, France. She was blind. The optic nerve were atrophied and useless. She visited Lourdes and had what she termed a miraculous healing. और वो एक बार गई लॉर्डेस के पास एंड उनको मिरेकलस हीलिंग के बारे में पता चला. रुथ कार्ट क्रैंस्टन, a Protestant young lady who investigated the road and wrote about healings at Lourdes in McCall magazine, November 1955, writes about Madame Bayer as follows. At Lourdes, she regained and sight incredibly with the optic nerve with still lifeless and useless. As several doctors could testify after repeated examination, a month later, upon re examination, found that the seeing mechanism had been restored to normal. एक अंधे को उसकी आंखें वापस दे दी. कैसे कैसे वो देखने लग गया. But at the first, so far as medical examination could tell, she was seeing with dead eyes. पहले जब एग्जामिनेशन हुआ उससे पहले पता चल गया था वो डेड आइज देख मतलब वो अपनी आंखों से देख नहीं सकती. उसका जो पहला टेस्ट था उसमें वो कुछ नहीं देख सकती थी और जब उसके बाद मिरेकलस हीलिंग हुई उसके बाद वो देख सकती है. ठीक है. आई हैव विजिटेड Lourdes several times where I too witnessed some healings, and of course, as we shall explain it to the next chapter, there is no doubt that healing take place at many shrines throughout the world, Christian and non-Christians. ठीक है. इस पूरी दुनिया में आपने देखा होगा लोगों को हील होते हुए. सिर्फ क्रिश्चियंस नहीं, नॉन क्रिश्चियंस नहीं, और भी लोग हील होते हैं. The water of shrine did not heal Madame Bayer, to whom we just referred, but by her own subconscious mind, which responded to her belief. The healing principle within her subconscious mind responded to the nature her thought. Belief is thought in the subconscious mind. Believe एक thought है आपके subconscious mind में. It means to accept something as true. The thought accepted executes itself automatically, undoubtedly, and Madame Bayer went to the shrine with expectancy and great faith, knowing in her heart she would receive a healing. Her subconscious mind responded accordingly, releasing the ever present healing forces. The subconscious mind, which created the eye, can certainly bring a dead nerve blank to life. What the creative principle created it can recreate. According to your belief, it is done unto you. How to convey the idea of perfect health to your subconscious mind. कैसे अपना आइडिया को कन्वे करो कि एक परफेक्ट हेल्थ आप रख सकते हो अपने कॉन्शियस माइंड को कैसे सबकॉन्शियस माइंड को कैसे बताओगे. A Protestant minister I knew in Johannesburg, South Africa, told me the method he used to convey the idea of perfect health to his subconscious mind. He had cancer of the lung. ओ भाई साहब, एक बंदे को कैंसर था, एक मिनिस्टर है उनको कैंसर था. अब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलकर कैसे उसे ठीक किया. लेट्स डिस्कस. एक सेकेंड, थोड़ा ब्राइटनेस बनाओ. हाँ. His technique, as given to me in his own handwriting, is exactly as follows. Several times a day, I would make certain that I was completely relaxed mentally and physically. I relaxed my body, speaking to it as follows. My feet are relaxed, my ankles are relaxed, my legs are relaxed, my abdominal muscles are relaxed, my heart and lungs are relaxed, my head is relaxed, my whole being is completely relaxed. After about 5 minutes, I would be in a sleepy, drowsy state. And then I affirmed the following truth. The perfection of the God is now being expressed through me. The idea of perfect health is now filling my
Subconscious mind. The image God has of me, a perfect image, and my subconscious mind recreates my body in perfect accordance with the perfect image held in the mind. आगे बढ़ते हैं. Of God, this minister had a remarkable healing. This is a simple, easy way of conveying the idea of perfect health to your subconscious mind. इस बंदे ने हील भी कर लिया और इसने आपको बताया कैसे अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को बताया जाए कि आप अपने को सेल्फ हील कैसे कर सकते हो. Another wonderful way to convey the idea of health to your subconscious mind is through disciplined or scientific imagination. Disciplined तरीके से सोचो या फिर scientific method से सोचो. I told a man who was suffering from functional paralysis to make a vivid picture of himself walking around in his office, touch the desk, answering the telephone, and doing all the things he ordinarily would do if he were healed. I explained to him that he'll sorry, नींद आ रही है. I explained to him that this idea and mental picture of perfect health would be accepted by the subconscious mind. He lived the role and actually felt himself back in the office. He knew that he was giving his subconscious mind something definite to work upon. His subconscious mind was the film upon which the picture was impressed. One day, after several weeks of frequent conditioning of the mind with this mental picture, the telephone rang by prearrangement and kept ringing while his wife and nurse were out. The telephone was about 12 feet away, but nevertheless he managed to answer it. He was healed at that hour. The healing power of the subconscious mind responded to his mental imaginary and a feeling followed. This man had a mental block which prevented impulses of the brain reaching his legs. Therefore, he said he could not walk. When he shifted his attention to healing power within him, the power flowed through his focused attention, enabling him to walk. तो उसकी जो दिमाग में कुछ गैप था, वो सिग्नल नहीं भेज पा रहा था टांगों को चलने के लिए. फिर जब उसने ये प्रोसेस अपनाया सबकॉन्शियस माइंड वाला, तो वो उसका दिमाग वहाँ बिजी हो गया. तो जब उसे चलाना था तो उसका दिमाग काफ़ी एक्टिव तरीके से चलने लग गया. Whatsoever ye shall ask in prayers, believing ye shall receive. अगर जो आपको चाहिए उसको प्रेयर में मांगो, वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी. Ideas worth remembering. Your subconscious mind controls all the vital processes of your body and knows the answer to all problems. आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपकी बॉडी के बारे में सब कुछ पता है. और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उसके पास हर चीज़ का जवाब है. Prior to sleep, turn over a specific request to your subconscious mind and prove its miracle working power to yourself. Whatever you impress on your subconscious mind is expressed on the screen of space as condition, experience, and events. Therefore, you should carefully watch all ideas and thoughts entertained in your conscious mind. The law of action and reaction is universal. The law of action and reaction universal है. Your thought is action, and your reaction is automatic response to your subconscious mind. To your thought, watch your thoughts. All frustration is due to unfulfilled desire. If you dwell to obstacle, delay, and difficulties, your subconscious mind responds accordingly, and you are blocking your own good. ठीक है, जितना भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, यही सारी चीज़ें आपके पास अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स लेके आती है. इफ़ यू ड्वेल ऑन द ऑब्स्टिकल, अगर आपने सोच लिया, अगर आप ऑब्स्टिकल के पीछे ही लगे रहे मेहनत करने में, तो दिक्कत कभी भी कोई चीज़ सॉल्व नहीं होगी. तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन के पीछे भागो, प्रॉब्लम के नहीं. द लाइफ प्रिंसिपल विल फ्लो through you rhythmically and harmoniously if you consciously affirm, I believe that the subconscious power which gave me this desire is now fulfilling it through me. This dissolves all conflicts. You can interfere with the normal rhythm of your heart, lungs, and other organs by worry, anxiety, and fear. अब क्या है कि आप नॉर्मल रिदम में इंटरफेयर कर सकते हो अपने हार्ट, लंग्स, कोई भी ऑर्गन को जो रिदमिकली चल रहा है उसको ख़राब कैसे कर सकते हैं, आप बात करते हैं आगे. Feed your subconscious mind with thoughts of harmony, health, and peace, and all the functions of your body will become normal again.
अगर आप अच्छी चीज़ें सोचोगे तो आपके जो बॉडी काम कर रही है वो अच्छे से करेगी. To keep your conscious mind busy with the expectations of the best and your conscious will faithfully reproduce your habit thinking. Imagine the happy ending or solution to your problem. Feel the thrill of accomplishment, and what you imagine and feel will be accepted by your subconscious mind and bring it to pass. आगे बढ़ते हैं. हम लोग आ गए हैं चैप्टर 4 पे. पेज नंबर है ये 40. पेज नंबर 51 तक ख़त्म करके हम सो जाएंगे. ठीक है, आज का टारगेट यही रखते हैं, लंबा नहीं बड़ा नहीं, ओनली 10 पेजेस. मेंटल हीलिंग इन एंशियंट टाइम्स. कैसे पहले के समय में मेंटल को मेंटल एबिलिटीज़ को और आपके दिमाग को हील किया जाता था. Down through the ages, men of all nations have somehow instinctively believed that somewhere there resided a healing power which could restore to normal the functions and sensation of a man's body. तो पहले क्या होता था, हीलिंग पावर पे काम किया जाता था, जो कि हमारी जिस बॉडी में प्रॉब्लम है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए. They believed they believed that this strange power could be invoked under certain conditions, and that elevation of human suffering would follow. The history of all nations present testimony in support of this belief. In the early history of the world, the power of secretly influencing men for good or evil, including the healing of the sick, was said to be possessed by the priests and holy men of all the nations. पहले क्या किया जाता था कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है, अच्छे तरीके से गलत तरीके से भी, कुछ किसी को बोल के कि आप ठीक हो जाओगे, इसे करो, वो करने से ऐसे ऐसे होता था. और पहले बोला जाता था कि हीलिंग पावर्स प्रीस्ट के पास या होली मैन के पास होती है. हर नेशन में होता है कोई ना कोई. हीलिंग ऑफ द सिक वॉज सपोज टू बी अ पावर ड्राइव्ड directly by the God, and the procedure and process of healing varied throughout the world. The healing process took the form of supplications to God, attended by various ceremonies such as the laying on of hands, incantations, the applications of amulets, talismans, rings, relics, and images. For example, if the religious of antiquity present in the ancient times gave drugs to the patients and practiced hypnotic suggestions prior to the planet's sleep, telling him the god telling him that the gods would visit him in his sleep and heal. टाइम हो गया आधा घंटा. टारगेट है 10 पेज पढ़ने का, और मेरे शब्द तो अभी से लड़खड़ाने शुरू हो चुके हैं, मुझे लग रहा है नींद आ रही है. चलो देखते हैं कहाँ तक पढ़ते हैं. 10 का टारगेट अभी पेज नंबर 1 पे है, 41. Many healing followed. Obviously, all this was the work of potent suggestion to the subconscious mind. After the performance of certain mysterious rites, the devotees of Hecate would see the goddess during sleep, provided that before going to sleep they had prayed to her according to weird and fantastic instructions. They were told to mix lizard and raisins, frankincense and myrrh, and pound all this together in one air under the crescent moon. Healing were reported in many cases following this grotesque procedure. It is obvious that these strange procedures are mentioned in the illustration given. Flavored suggestions and acceptance by the subconscious mind of these people and make a powerful appeal to their imaginations. Actually, in all these healings, the subconscious mind of the object was healed. अब जितनी भी हीलिंग होती है, लोगों को कभी जादू टोना करके दिखाया जाता है, कैसे भी करके दिखाया जाता है, पर उनके दिमाग में फिट किया जाता है कि आपका दिमाग इसको सच मान ले और आप ठीक हो जाओ. प्लेसेबो इफेक्ट भी देखा है, खाली गोली डॉक्टर दे देता है, आप खा लेते हो, आप ठीक हो जाते हो, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड को पता चल चुका है, हाँ भाई मैंने दवाई खा ली, अब तो ठीक ही होना है. ये तो बात है ही. कुछ लोग होते हैं ना कि भाई नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़, दवाई से नहीं होगा, तो वो फिर ऑपरेशन तक जाते हैं. In all ages, unofficial healers are obtained. Remarkable result in cases where authorized medical skill and failed. This gave cause
for thought. How do these healers in all parts of the world effect their cures? How do these healers in all part of the world affect their cures? कैसे इस पूरी दुनिया में लोग अपने क्योर को बेहतर बना रहे हैं? The answer to all these healings is due to the blind belief of sick person. अब क्या होता है कि वो चीज़ें सच क्यों होती है? क्योंकि ब्लाइंड जो जितने भी लोग हैं, चाहे वो ब्लाइंड हो या कोई भी प्रॉब्लम सिक हो, अगर वो चाहें कि मैं ठीक हो जाऊँ तो ठीक हो जाएंगे, है ना? Which release the healing power resident in the subconscious mind. Many of the remedies and methods employed were rather strange and fantastic, which fired an imagination of patients, causing an aroused emotional state. This state of mind facilitated and suggestion of health, and was accepted both by conscious and subconscious mind of the sick. This will be elaborated on the further in the next chapter. चलो पेज नंबर 41 पे ही हम अंत करते हैं. खतरनाक वाली नींद आ रही है. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे. एंजॉय द बुक रीडिंग विद अमन रावत और पहाड़ी ब्रदर्स. नहीं, अमन रावत वाला चैनल नहीं, ठीक है. चलो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में. ये लाइव स्ट्रीम नहीं थी, ये रिकॉर्डेड सेशन था.